Okay, so before starting the class, we learn about the Mauryan Empire. Before that, there is a Namdas Empire is there. Next thing, we learn about the Chandragupta Maurya also. We have also understood who is the Bindusara, who is the Chandragupta Maurya, who is the Chanakya. Now it's time for the next thing, that is the Ashoka. Who is Ashoka? First of all, tell me one thing. Who is Ashoka? Son of Bindusara. Bindusara's son. Bindusara's son, or you can say the grandson of the Chandragupta Maurya also. So, anything you know about the Ashoka, you can also speak in your own language. Ma'am, Ashoka defeated the Kalingas. Ma'am, Okay. Ashoka defeated Kalinga, the ruler of Kalinga. कलिंगराज रूलर ऑफ कलिंगा, राइट. एनीथिंग एल्स, उसने क्या क्या किया उसके बारे में आपको कुछ पता हो तो आप मुझे Ma'am, बता सकते he हैं. was Ma'am, Ashoka was first in Ashoka was following Jainism, but after the youth of Yes, Kalinga, Ashoka he was following Buddhism. Buddhism. Okay, please, ma'am, I'm request. You are the not a small kid, so request. I'm giving the humble request. When someone is speaking, please mute yourself, and whenever he or she complete, then start speaking. So it's a humble request from my side. Yes, please be continue, Yatharth. मैम मैंने कह दिया. Can you please repeat again? आप वापस से repeat कर सकते हो. मैम अशोका है ना, पहले वो जैनिज्म फॉलो करता था, पर हाँ, कलिंगा के बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट. बुद्धिज्म में हो गया. Right, very good. Shruth. ma'am, he was referred as conqueror of India. Conquer of India. You have idea why the name of that given Conquer of India? ऐसा क्यों बोला था? Ma'am, because he ruled over whole India. Ruled Not over whole. whole the India, and he is also doing the good works. That's why he's also famous. But one thing is that he is a very short tempered, so sometimes it will be hyper. कुछ टाइम पे ऐसा होता था, not every time. It will be happen sometimes. So here there is all things given about that. He's always follow the footsteps of his father and his grandfather Chandragupta Maurya and the Bindusara. Even उसने बहुत अच्छे काम भी किए. He also follow the he also may take won all the wars. Most famous war, you also know the Kalingana war. So first we are read about the Ashoka. Who is the Ashoka? Then we go ahead with the next topic. Bindusara was the succeed by his son Ashoka. Okay, can anyone read it? जिसने कल नहीं किया था. Can I? Ma'am, वेदांत. can I read? Yes, ma'am. Please start reading. I will be give a chance to everyone, so don't worry. Ashoka. Bindusara was succeeded by his son Ashoka. Earlier, he was called चंद्र Ashoka. नहीं था, चंदा अशोका. It's not Chandra. There is no. Chanda Ashoka, which means Ashoka, the fierce, as he was Very short. very short tempered. यस का मतलब होना है कि शॉर्ट टाइम में टेम्पर हो जाना, बहुत जल्दी ऐसे गुस्सा कर देना, लाइक दैट. यस प्लीज. The history of Ashoka is largely reconstructed on the basis of inscriptions that were found in the different parts of India. Okay. These inscriptions throw light on his career, his domestic and foreign policies, as well as the extent footsteps of his Extent grandfather of and his empire.
extent of his empire. उसने अपने करियर में इतने आगे गया जिसकी वजह से उसने अपना जो एम्पायर था, जो पहले था चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा के टाइम पे, उससे भी ज्यादा और अच्छा विथ पॉलिसीज उसने फॉलो किया, एक्सटेंड किया. नेक्स्ट, अशोका हैड He extended his frontiers with fresh conquests and wait. You are going to the next line. Please read above line. Ashoka had inherited. Ashoka had inherited a vast empire from his father. He continued to follow the footsteps of his grandfather and father. He Yes. extended his frontiers with fresh conquests and engaged in war with different states. So उसने किस तरह से एक्सटेंड किया, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्रंटेज मतलब कि अ लाइन, मीन्स आप हिंदी में बोल सकते हो उसको सीमा, कि उसने सीमा जो होती है मतलब वन स्टेट टू अदर स्टेट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट frontage will be he follow and he will be won all the wars. You can see that the famous war, you know that is a Kalinga war. उसने बहुत अच्छे से सारे जो युद्ध हम बोल सकते हैं, war, you can say that war are, it's very easily won that all the wars. Now it's time for that is the images of given Chandragupta Maurya, Bindusara, Ashoka. Now time for the next one, that is the Kalingana war. What will be happen in the Kalingana war? Ashoka's father is already trying, Bindusara want to try the won the Kalingana, but he's not able to won that. So his son Ashoka want to try that Kalingana and he sent the letter to the Kalingraj. उसने कालिंगराज को एक लेटर भेजा, for the war, and in that Ashoka will be won and the Kalingana is in the Ashoka's area, means in the Mauryan Empire at that time. So let's read it, the Kalingana war. What is the Kalingana war? Yes, Shruth. Then next one will be read by Laksh Patel. Kalinga was one such territory which Bindusara too was not able to conquer. In the 12th year of his reign, Ashoka sent a letter to Raj, Kalingraj. the ruler of Kalinga, asking its submission. However, Kalingraj refused to submit. As a result, Ashoka led a huge army to Kalinga. The entire kingdom of Kalinga was turned into battle arena. So you can see here, so पहले तो वो ready नहीं था for the war, but Ashoka refused him and it will be submitted, and after that the whole Kalingana will turn into the battle arena. Arena means the area, you can say that battleground. In your area you can say arena means a ground, one type of. Please read next one. About 1 lakh Kalingans lost their lives and 1,50,000 were wounded. An equal number of Mauryan soldiers were also killed. Yes. The Kalinga battleground turned blood red after the war. Ashoka was so moved by the outcome of the war that he gave up war. He became a follower of Buddhism and made Buddhism his state religion. Okay, so अभी हमने पहले ही डिस्कस किया, someone यथार्थ से टेल वो पहले जैनिज्म को फॉलो करता था. आफ्टर द कलिंगना वॉर ही फॉलो द बुद्धिज्म. You have to be remember the numbers here. 1 lakh lives will be lost in the battleground and 1,50,000 is wounded. उस टाइम पे ये दोनों सेम वैल्यू आपको ऐसे, नॉट अ सेम वैल्यू बट नियरेस्ट टू दैट, उसके पास में ही वैल्यू होगी 1 लाख और 1,50,000 फॉर द कालिंगानास. रिमेंबर दिस numbers. This is the empire after the Kalingana in the 265 BC, during the 265 BC, and at that time also the
capital of Maurya Empire is the Patliputra. That is also given in your textbook on the page number 72. Now, next one is the welfare measure. Okay, so welfare measure का मतलब क्या होता है कि सिंपली अगर आपको कुछ रूलर बनना है, जैसे कि हम हमारे क्लासरूम में मॉनिटर्स बनाते हैं, क्लीननेस मॉनिटर. सो व्हाट इज द वर्क ऑफ द क्लीननेस मॉनिटर? उसको पहले तो खुद के रूल बनाने पड़ेंगे कि यस मुझे ये क्लीन रखना है, सबको ये वर्क डिवाइड करना है. देन व्हाट इज द वर्क ऑफ द मॉनिटर? मॉनिटर का वर्क क्या होता है कि वो वहां पे बैठना चाहिए अच्छे से, सब लोग जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो शांति से अपने वर्क करने चाहिए. दिस इज अ वर्क ऑफ द मॉनिटर. मतलब कि एक जो आप बोल सकते हो दैट इज अ वन किंग हैव आल्सो देयर ओन प्रिंसिपल्स. तो अशोका ने अपने प्रिंसिपल्स के डिलीवर करने के लिए द वेलफेयर मेजर इंस्टॉल किया. देन ही इज आल्सो इंस्टॉल द अशोका's धामा. बोथ थिंग्स आर फॉर द डिलीवर द प्रिंसिपल्स ऑफ द अशोका. क्या? ताकि उसको जाने, सब उसको फॉलो करें. कुछ लोग क्या होते हैं, सारे लोग जो होते हैं, अभी अशोका मगध में रहता था तो सभी लोग मगध में नहीं थे. everyone don't know about the Ashoka and its principle. उसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से फॉलो करना, everyone cannot be know that. हमारे पास जो टेक्स्ट बुक अवेलेबल रहती है उसका जो ऑथर है वो हमारे पास नहीं रहता. उसने पूरी बुक लिखी और आपको बताया कि दिस आर द प्रिंसिपल, दिस इज द एजुकेशन, दिस इज द मैथमेटिक्स. So like that, Ashoka is doing that. He write the some of the books, or he sent his messenger to the other states and the countries, and uh, tell the people to follow his principles or the rules, you can say. Now, time for the welfare measures. So, who will be? Can I read? Yes, Lakshya Patel. Then Malhar will be read it. After the welfare, next is the Ashoka Dhamma will be written by the Malhar Patel. Yes, Lakshya, please start reading. Welfare measures. Ashoka set very high principles for himself with regard to kingship. He considered his subjects as his children. He appointed Raju Rajukas. It's a Rajugas simple. This is a simple name. ये एक नाम ही है, but that will be asked in the exam कि who is the Rajukas, why Ashoka developed the Rajukas, उसने क्यों Rajukas को बुलाया, like that. So आपको Rajukas word जो है उसको याद रखना पड़ेगा. Yes, please continue. Rajukas for delivering justice in the empire. He planted What is trees. the goal of the Rajukas? They will be deliver the justice in the empire. This is the first principle he wants to deliver. सबके लिए उसने अलग अलग लिखे, ये प्रिंसिपल के लिए ये जाएंगे, ये प्रिंसिपल के ये जाएंगे. वैसे ही जस्टिस के लिए उसने रजुकास को डिलीवर किया, ट्रांसलेट किया, अपॉइंट किया. नेक्स्ट. He planted trees, dug wells, constructed canals. Dug wells. Dug wells, constructed canals, built rest houses on highways, and built hospitals for humans as well as animals. So He these are carved the rock. actually whenever in the exam ask which are the works Ashoka done by Ashoka, so you can write down these things: plant tree, dug wells, construct the canals, build the rest houses on the highway, build hospital for the human as well as animals. Right? Whenever ask in the exam. Next. He carved rock and pillar Edicts. to establish What to establish craved rock का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम बोल सकते हैं हिंदी में, मैं बताऊं, अच्छी सी चट्टान बनाना मीन्स लाइक अ वन टाइप ऑफ, जैसे हमारा कोई स्तंभ हम देखें,
रेड फोर्ट के जिस तरह है रेड फोर्ट, उसी तरह की कुछ अच्छी सी नक्शी जैसे काम होती है, उस तरह से कुछ बनाना। और पिलर एडिक का मतलब क्या होता है? हैव यू सीन द अशोक स्तंभ? एनीवन? Yes, ma'am. हाँ, उसकी Ma'am, तरफ वैशाली पिलर्स में बनाना, that will be done by the Ashoka. Yes, please continue. established to Establish, establish direct to establish establish direct communication with the with. people. Why he is doing this all thing? To direct communication with the people. मतलब हम बोल सकते हैं राजा को अपनी जनता के साथ रहना चाहिए, like that. For that he is doing this all things. Yes. Next. These, these inscriptions were written in Prakrit, which was easily understood by the people. ओके, एट दैट टाइम, उस टाइम पे संस्कृत जो है वो ज्यादा लैंग्वेज यूज होती थी. नाउ इट इज वी आर यूजिंग द इंग्लिश एंड द हिंदी, right? But at that time Sanskrit is the very famous and all the peoples are understood the Sanskrit at that time. Even Hindi is also understood. Prakrit is a one type of Sanskrit language. It's a related to Sanskrit जिसको easily अच्छे से समझ पाओ. जैसे कि अगर आपको कोई मैसेज अच्छे से पास करवाना हो, तो मैं आपको बोलूं कि आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप कोई मैसेज पास करो. तो उस टाइम पे प्राकृत फेमस थी, तो वहां पे अशोका ने जो भी लिखे प्रिंसिपल्स लिखे, दैट विल बी ऑल रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज. प्राकृत इज अ वन टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट यू हैव टू कंपल्सरी रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट, अशोका's Dhamma. Yes, Malhar, read. Ashoka adopted several measures to spread his dharma. He sent his messengers to other countries to spread his dharma. इट्स He अ वन टाइप appointed ऑफ प्रिंसिपल्स. उसके जो मैसेजेस थे उसको स्प्रेड करने के लिए ही दामा डेवलप हुआ था. यस. he appointed special offers known as Dhammahamatras to teach दामा the महामंत्रास. दमाहात्रास नहीं, दामा महामंत्रास. policies of Dhamma to the people. Okay. Ashoka held the third Buddhist council or missionaries were sent to South India, Sri Lanka, Okay. Myanmar and other countries for preaching Buddhism. Missionary means wants He to prohibited killing birds and animals. speak. I will be speaking the last. What happened, Malhar? बोल मल्हार बोल. What He, is this? he prohibited killing birds and animals, banned birching Birching of of. animals in his palace kitchen. Okay. Thus, he stressed on having kindness towards animals. So first of all उसने क्या किया कि first he sent the some of the peoples, or you can say the some of the close peoples of him, and to spread his principle, his dhammas means they can also spread in a form of the drama. Next, he also sent his missionaries, means the peoples that will be sent his own principle or messages in the South India, Sri Lanka, Myanmar, and the other countries also. Next, हम whenever we are learn about the some of the king, then we are first asking what good things he is doing. So good, in the good thing of Ashoka, he is doing this thing, killing, prohibited on the killing birds and the animals, and ban matching of the animals in his palace kitchen. उसने पहले सबसे अच्छा ये काम किया. He wants to show the kindness of animals and birds of him. वो अपना काइंडनेस दिखाना चाहता था लोगों को कि आई डोंट वांट टू किल द बर्ड्स एंड एनिमल्स.
and he also wants that people also follow that thing. Okay, now next thing, that is the Ma'am, can Mauryan I read? Mauryan Ma'am. okay, okay, please wait. Mauryan administration. Okay, before the reading, Ma'am, before time over. before reading it, I want to just ask you, what do you think, what is the work of king? किंग क्या करता होगा? आपने इतनी सारी मूवीज के Ma'am, नाम मुझे कल बताए थे, आपने बहुत सारी चीजें मुझे बताई थी किंग के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या किंग ऐसे बैठा रहता है कि या फिर कुछ काम भी करता है? मैम मैम, किंग मैम वो पब्लिक की प्रॉब्लम समझता है और उन्हें सॉल्व करता है। Yes, ma'am. ओके, सबकी प्रॉब्लम समझता है, उसको सॉल्व करता है। यस यथार्थ, योर टर्न। मैम किंग टेक केयर्स ऑफ हिज किंगडम। हाँ, मैम उसके किंगडम पे अटैक होता है तो बाद में किंग ऑर्डर देता है उसके सोल्जर्स को। ओके, ऑर्डर्स देना, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑर्डर्स देना। सेकंड की किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना। थर्ड, एनीथिंग एल्स? यस मैम, फिर वो अपना एडमिन संभालता है मैम, पूरा राज्य में मैम। क्या नया एडप्ट करने का है, क्या करने का है मैम। देख, हमें देखना भी तो पड़ेगा कि स्टेट को आगे कैसे बढ़ाना है, कि वैसा का वैसा रखना है। हम हमारे हिम्मतनगर की ही बात करें तो आप हिम्मतनगर में देख सकते हो कि उसमें पहले कैसा था, अभी कैसा है, कितना डेवलप होगा, आगे का फ्यूचर जो है वो अभी से सोचा जा रहा है। Means you can see that every state, or you can say that uh, uh, village, everything will be developed nowadays, so at that time also develop. So role of the king is most important thing is that usko apne state ko kaise develop karna hai, apni country ko kaise develop karna hai, that thing he have to be followed. Now one thing you can see, if there is a kingdom with us, क्या अभी भी kingdom होता हमारा, if there will be a king, so who is the king? अभी जो हमारा पूरी कंट्री चला रहा होता, who will be king of India? नरेंद्र मोदी। यस, Modi. आपको पता है ये पीएम जो है वो सारे वर्क करता है, मीन्स अ पीएम। आई वांट टू आस्क अबाउट द नेम पीएम, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मैम मीन्स अ प्रेसिडेंट किंग ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट मेन होता है मैम प्रेसिडेंट में Okay, मैम so रामनाथ कोविंद आएगा तो please रामनाथ कोविंद नहीं। whatever, so that is the prime minister, whatever, president of India. You know that what is the work of pm is control all over the country, वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है। बट सेकंड स्टेप, क्या वो पूरी कंट्री में घूम के सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? नो मैम। नो। तो उसके लिए उसने क्या किया? व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ हिम? उसने ऐसा क्या किया तो ताकि वो सारे स्टेट की बातें पता कर पाता है? मैम लोगों को हायर करता है। लोगों को हायर करता है। फर्स्ट वो पहले होता है फॉर ऑल ओवर द कंट्री, कंट्री के लिए एक पीएम होता है। फिर सेकेंडली उसने डिवाइड किया कंट्री को स्टेट्स में। स्टेट के लिए क्या होता है? he else should tell us, he hired the people, उसने पीपल्स को हायर किया। तो वो पीपल कौन कौन से हो सकते हैं? यू कैन टेल मी। Ministers, you can say that CMs. CM is the main part of that. Chief Minister. CM, Chief Minister, Chief right? Minister. Then मैम स्पाइज। yes, spies, you can say that. After that it will be came on the district. CM भी पूरी जो स्टेट है उसको देख नहीं सकता, तो उसके अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, एंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है विलेज। इट विल बी लुक आफ्टर द विलेज, जैसे कि ग्राम पंचायत पहले होता था। सो दिस इज द फुल चेन ऑफ द एम्पायर रोल। अगर मैम आपको हाँ? का मेयर होता है। आपकी आवाज कट हो रही है। स्टूडेंट,
Please mute yourself whenever one will speak. Yes, what do you want to say? मैम बाद में डिस्ट्रिक्ट के बाद सिटी आता है. सिटी आता है, ओके, लेकिन हम अभी विलेज भी ले सकते हैं, सिटी लेना हो तो सिटी भी ले सकते हो. मैं ऑथराइजेशन की बात कर रही हूँ कि इसके पास ये ऑथराइजेशन होता है. सेकंड, किंग का रोल दूसरा क्या होता है कि उसको देखना पड़ता है कि उसकी इनकम, मतलब उसका जो स्टेट है, उसकी जो कंट्री है, वो कैसे चलेगी. तो at that time, nowadays there are many of the, you can say, the light bill is came, the water bill is also came. So at that time this thing also happened. At that time you can say कर महसूल करना उस टाइम पे वैसा होता था. तो किंग के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उसको अपनी कंट्री कैसे चलानी. तो उसके लिए ही विल बी यूज दिस सिस्टम, द कर सिस्टम. उसने कर का यूज किया और अपने स्टेट को आगे बढ़ाया. एंड हाउ कैन ही सेव हिज कंट्री, उसने अपनी कंट्री को कैसे सेव करना है, उसके लिए उसने अपने जासूस, हम बोल सकते हैं, यू कैन से स्पाइसेस आल्सो. देन ही आल्सो हायर्ड कंसल्टेंट ऑफिसर्स लाइक अमात्य, महामंत्री and the ministers also for the for the kingdom to rule on the kingdom. So these are all the work of the king. ये सारे रोल है किंग के कि उसको क्या क्या करना चाहिए. जब आप कोई मूवी देखते हो तो उसमें भी आप देखते हो कि उसमें मंत्रीज होते हैं, अमात्याज होते हैं. तो वो सारे किंग के लिए हेल्पफुल होते हैं कि आप ये करो, आप ये करो. दैट आर द एडवाइस, गिव द एडवाइस टू द किंग. सो दिस आर द रोल ऑफ द किंग कि हायर, इसको हायर करना है, किसको हायर करना है, या फिर आप रोल करने के लिए फॉर दिस स्टेट whom I have to be take these people, like that. Now let's read the role of the king. Ma'am, can I read? Who is remaining? First I have to be checked. Yes, Jiansh, please read. Yes, ma'am. Mauryan administration. Role of the king. The king was the supreme and the final authority in all the matter of the empire. He led in the war with consolation from his senapati or commander in chief. Senapati, He or you can made- take the second name, the commander in chief. He made important appointments looking into the state funds, meet Diplomats diplomats, and collected secret information from the spies. spices. Okay. He also issued यहाँ पे वेट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबके वर्क दिए हुए कि सेनापति या फिर कमांडर और इन द चीफ का क्या वर्क होता है. व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्पाइसेस, व्हाट इज द वर्क ऑफ द मंत्री परिषद और द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर. ऑल वर्क्स आर गिवन, किसका क्या वर्क होना चाहिए. यस, प्लीज रीड. Yes, ma'am. He also issued sasans or royal edicts for the management of the Edicts, not etiquettes. or royal edicts for the management of the people. He was helped in the work by Mantri Parishad. Prishads or Council of Ministers. Okay. Then There are various references of high officials such as Amatyas, Mahamantras, Mahamantras, and Adhyaksh. Adhyaks In in the Arthashastra written by Arthashastra written by Chanakya. Chanakya. These are the high He meant- officials जो उनके पास बैठते थे उनको एडवाइस देने के लिए. Yes, please read. He maintained a huge army for the protection of the kingdom as well as for conquest of new territories. The maintenance of the army was done with the taxes collected Collected. from the people. Chandragupta maintained 6 lakh foot soldiers, 30,000 Cavalry,
cavalry, and 9,000 elephants. You can see here the numbers. So these numbers will be asked in the exam also. So आपको ये याद रखने पड़ेंगे. And here you can see that all the process of empire is given कि पहले क्या होता था, जैसे मैंने बोला CM, PM, then CM, then home minister also came, district level, village level, all the things is here. तो इस तरह से आप देख सकते हो, खुद भी समझ सकते हो अभी जो हमारा चल रहा है उस तरह से जो मैम CM PM वाली प्रोसेस है. यस, कैवेलरी मतलब फोर्स, Cavalry. द हॉर्स हॉर्स का गुड्स मैम का जो होता है उसको हम बोलते हैं कैवेलरी. मैम ऐसा नहीं. हाँ, तो कैसा होता है? मैम सोल्जर्स विथ गन नहीं होता. यस, हॉर्स सोल्जर्स होते हैं, उसको हम कैवेलरी बोलते हैं. सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स आर हियर, दैट आर 6,30,000 मीन्स द हॉर्स सोल्जर, जो हॉर्स पे बैठ के वॉर में जाते हैं, दैट इज अ कैवेलरी. That is also soldier, वो भी soldier ही है with horse. सारा ना सारा. Okay. Now, yes, please read. administration of empire. Empire was divided into provinces for administrative purposes. Can you please take your mic, take your mouth away from the mic. Please speak. The provinces were further divided into districts which were managed by sthanikas. Each district consisted of 5 You to 10 directly villages. go here. What about these sentences? He provides in Ma'am, their rule by. Okay, read. Prince or Each Kumar. district consisted of 5 to 10 villages. Gram or village was the lowest unit of the administration. Okay. Gramika was the head of village who used to regulate land and water rights and collected taxes from the people. Spies were appointed to keep watch over the officials. Okay, everything will be watched under the spices that who give the all the information to the king. Now last source of the income, जैसे हमने अभी बोला कि taxes के बिना तो country भी नहीं चलती. So at that time the kingdom will be not have an income without any of the taxes. So it's a source of the income is the main thing is the taxes. So let's read it. Who is remaining now? Gia. Yes, ma'am. Start Sources reading. of income. Land revenue was the main source of income. The farmer paid one sixth of the total produce to the state. Okay, आपको ये याद रखना है कि फार्मर कितना पे करता था. 1/6 of total. Yes. Chanakya maintained several types of tax collected from the peasants, artisans, and traders. What do you mean by the peasants? Peasants means the farmers. Farmers. Yes, it's a farmers. Next. Tax was also collected from Mines, forest, and customs at the frontiers, tolls, ferry duties, and fines. Mine means what? Mine means of food. Okay. Next. Ferry duty means one place to another place.
And fine means आपको पता होगा कि whenever you are late, then teacher will be take a fine from you, like that. I give the only example. Yes, please read. The official in charge for finances and Revenue. revenue collection was known as Samaharta. Sama. The These all are the Sanskrit or the Hindi names. That's why it will be came with the I tag. ये I tag के साथ दिए हुए ताकि आप उसको identify कर पाओ. The amount collected from the tax was spent on maintenance of the Maintenance. king, maintenance of the king, his ministers, army, salaries of Of other officials, religion religious purpose purposes on and on infrastructure. What is the use of that taxes is given here. टैक्सेस का यूज किंग कहाँ पे करता था, किस तरह से करता था, सैलरी को देने में, आर्मी को देने के लिए, देन फॉर एग्जांपल कि कुछ ओकेजन आ रहा है इन ऑल ओवर द कंट्री, दैट टाइम ही विल बी यूज द टैक्सेस. Okay, so now we are stop here, and next time we will be learn the next thing, next topic. Request to everyone, please sit with your book and underline that thing that I underline. Okay, Okay, so ma'am. now I'm going to the end